morning, students. How are you all doing your daily tasks? I hope now you are not bothering your parents for completing the homework. And that's good. So, me, Happy Upadhyay, welcomes you all in your own English online class. English is fun. Students, can you tell me one thing? क्या सबके लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक जैसे होते हैं? मैम मतलब ये कि अगर आपको मैगी नूडल्स पसंद है तो क्या जरूरी है कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स को भी वही पसंद हो? नो मैम, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती है. Yes, my dear kids. Today, in this module, we are going to start a new topic, and that is speaking. In speaking, today we are going to learn about how to speak few lines in English about our likes and dislikes. So, without wasting any time, let's get started with the topic. Wow! Pastries! I love to eat pastries. मुझे pastries खाना बहुत पसंद है. Hey! What's that? That is a cheese. Do you like to eat cheese? क्या तुम्हें cheese खाना पसंद है? No. I don't. Students, आपने देखा कैसे इस बॉय ने अपने चॉइसेस के बारे में बताया है कि उसके क्या लाइक्स हैं एंड क्या डिसलाइक्स. एंड वी हैव आल्सो लर्न दैट हम कैसे अपने आइडियाज को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड इफ यू आर रीडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग आनी ही चाहिए. मैम, इंग्लिश अंडरस्टूड तो कर लेते हैं बट बोल नहीं पाते. डोंट वरी माय किड्स, इसमें आपको सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आपकी मैम को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था बट स्लोली सब आने लगा. स्टार्टिंग में थोड़ी मिस्टेक्स तो हुई बट फिर बाद में सब नॉर्मल हो गया. पहले तो आपकी मैम कहती थी, मैम ही इज मारिंग मी, मैम ही इज छीनिंग माई टॉय, मैम ही इज रुलाइंग मी. तब मेरी मैम ने समझाया, बेटा इट इज नॉट ही इज मारिंग मी, इट इज ही इज बीटिंग मी. और हम ऐसे नहीं कहेंगे he is छीनिंग my toy, हम कहेंगे he is snatching my toy. एंड अगर आप कहते हो कि he is ruling me तो ये बिल्कुल रॉन्ग है. It will be he is making me cry. तो देखा आपने आपकी मैम की इंग्लिश कितनी फनी थी. Yes ma'am. So now why fear when your ma'am is here? Let's know about some more sentences. Hey Jeannie, what's that? That's a carrom board. Do you like to play carrom board? क्या तुम्हें कैरम बोर्ड खेलना पसंद है? No, I don't. मुझे नहीं पसंद. Then what do you like? I like to play hide and seek. Noah, do you like to play hide and seek? No, I don't. Then, do you like to play football? Yes, I do. Hey, I'm hungry. मुझे भूख लगी है. Please give me one sandwich. Okay, take it.
has fallen down. Water नीचे गिर गया. अब क्या होगा? No problem. I'm so sorry. That's okay. I like Miss Dia. She is so polite. कितने प्यार से बात करती है ना वो. So my dear students, let's learn English by singing a song. So listen me very carefully and sing along with me. Do you like red color? Yes, I do. Yes, I do. I like red color. I like red flowers. Do, 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 do. Do you like to go to hospital? No, I don't. No, I don't. I don't like to go to hospital. No, no, no. No, no, no. Do you like banana? Yes, I do. Yes, I do. Do you like winters? No, I don't. Oh, it's cold. Na, na, na. No, no, no. Now, students, it's time to do an activity. And what you have to do is speak 5 lines about your likes and dislikes. Now students, आपको क्या करना है? अपने likes के बारे में and dislikes के बारे में 5 sentences speak करने हैं and उसका वीडियो बना के मुझे सेंड करना है. देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये कर पाते हैं. You can also take the example of the given clues. For example, I like mangoes, but I don't like watermelon. I like black color, but I don't like yellow color. I like to go to school, but I don't like to go to hospital. I like to play cricket, but I don't like to play chess. Now students, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 4 ही sentences दिए हैं ताकि आप इन सेंटेंस की हेल्प लेके बाकी के और सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सको. ये जरूरी नहीं कि जो मैंने दिया है आप वही यूज करो, बिकॉज आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपसे बेहतर कौन जान सकता है. एंड वो स्टूडेंट्स जो मुझे अपने वीडियो सेंड करेंगे उन्हें स्पीकिंग में 10 out of 10 मिलेंगे. एंड आई विल टेक दोज नेम्स इन माय कमिंग वीडियोस. That's it for today, kids. I hope now you will be able to speak few sentences in English. Till then, wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.